Hello guys, how's it going? I hope everything is well. So in this video we are going to talk about class 10th mathematics CBSE sample paper, right? So we can say model paper, sample paper, both are same only, but there is a minor difference in that. Okay, so let's see this paper. ठीक है, तो हमको ये पेपर देखना है. ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे पेपर देख लिए हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से और प्लेलिस्ट से. ठीक है ना, आपकी जैसी मर्जी होगी, राइट. So we are going to see this question from here. So first of all, it is a 1 mark question, then 2 mark question, then and this is a high, it is a marks question that will come. Okay na, right. So I hope we already know that. ओके ना. सो जस्ट टेक अ पेन एंड पेंसिल. ठीक है, उसके बाद आप पेन एंड पेंसिल से पेन लो चाहे पेंसिल जो भी है आपके पास, एंड नोट्सबुक में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो. ओके ना, डोंट लुक दैट एंड जस्ट इफ यू वांट टू सेव इट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. ओके ना, राइट. ओके, सो आई होप इज़ इट क्लियर. ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है. ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो 10th वाला देखेंगे. 10 to the 13 is it there is nothing in that one. This is the 1 mark question only. You have to just take it out and you have to move from there. Okay, all right. Okay, (17, 18 and 19 one you can see. Then you can come to the here and this is something given, is it? Then after the 21 is given common difference of AP arithmetic progression, and 21, 22, 23 and 24 is given here. Okay, is it clear? Right. So if it is clear, then you can see that one. Okay, and 28, then here you can see 29, 30 and 31. all right. Okay, 32 and 34. Well, 35 is a very important question. Okay now, this is a mean medium. Medium is there. Okay now, so in a static they will differently ask you mean, medium, mode they will ask, or they will ask differently to find a frequency in that one. Okay, ठीक है ना, मेरे ख्याल से कोई डाउट वूट नहीं होगा. ठीक है ना, क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा. अगर जो अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा ना, तो उसके लिए क्वेश्चन सब एकदम हलवा होगा. ठीक है ना, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी है अकॉर्डिंग टू मी. इफ़ आई सी दिस पेपर, सो दिस पेपर इज़ वेरी वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी, बट आई डोंट नो इज़ इट ईजी फॉर यू और नॉट. बट एक्चुअली अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो डेफिनेटली इट इज़ ईजी. ओके ना, नथिंग इज़ हार्ड. ठीक है, चलो, यहाँ तो क्लियर है. वेल जो पेपर है नहीं है ये यहीं तक है. ठीक है ना, बाकी जो है वो आंसर शीट है. तो मेरे ख्याल से आंसर शीट उतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतना ज़रूरी नहीं है. मतलब कि हमको कॉन्फिडेंस है कि ये सही होगा तो होगा भाई. ठीक है ना, तो आई होप is it something helpful for you? I'm not, no, I don't know it is a very helpful for you or not, but is it, according to me, it is something little bit helpful for you. Okay na, so right, I hope is it clear, and we will meet another video. And if you're looking for the any kinds of sample paper, check out in the description. Okay, so let's meet another video. Jai Hind.